is just like that. It is less, you can call as it is a electronic device. Basically, it is used for calculating um, the arithmetic operation आमे करि पारुचे, as well as एबे हमर ईमेल पठे पारुचे, गेम खेली परिबा, वेब ब्राउजिंग करि परिबा, प्रेजेंटेशन देई परिबा, वीडियोस हमें बनै पारुचे, यूट्यूब वीडियो देखि पारुचे. So all kinds of thing we can do with a computer. The computer basically comes in the word as compute. Compute means that you can add the value, subtract the value, multiply the value. तो आम यहाँ कंप्यूटिंग जोटा करुचे सेटा को हमर कंप्यूटर कह. तो बेसिकली आगुरी केवल से गोटे पार्ट पे यूज होता है, एबे वेराइटी पर्पज पे कंप्यूटर यूज करुचे एंड इट इज नाउ बिकम द पार्ट ऑफ आवर लाइफ. जमती कि हमर मोबाइल डिवाइस वी कैन से इट इज जस्ट लाइक ए स्मॉल कंप्यूटर दैट वी हैव. मोबाइल नथिले आमे एमती ऑनलाइन क्लासेस होची, वी कैन कनेक्ट टू आवर फ्रेंड्स, माने टोटल फ्रेंड सर्कल टा हमर इन हैंड रे हम पाखरे रहउची. The computer in the form of personal desktop computer, laptop, tablet have become so much important part of every living that it can be difficult to remember a time when they did not exist. The computer एबे variety of parts सब आसी गलानी, जेमति कि हमें आगरो डेस्कटॉप यूज करथले जेतले मॉनिटर गुडा को बड़ पिक्चर ट्यूब इन पछू बारी के रहउतला. एबे हमर एलसीडी एलईडी आसीलानी जोटा पूरा फ्लैट रहउची. आगरो से जो मॉनिटर रखिया पे गोटे जगह दरकार पड़तला. तो कंप्यूटर रे आगरो हमर कोन यूज करा होतला ना, हमें टीवी भी देखि परिबा. टीवी रो जो पिक्चर ट्यूबटा बहुत बड़ रहउतला, बाहर को बारी के रहउतला. तो एबे से जिनस आउ नहीं, एबे से पिक्चर ट्यूबटा रिड्यूस हो गलानी. आम पाखरे एलसीडी एलईडी ये कॉन्सेप्ट सब आम पाखु आसी गलानी. So when the computer has, just a minute. The computer is a form of desktop computer, laptops, ये सब आसिला. The approximately all the computer have technically been in use since abacus approximately 5000 years ago. हमें कही परिवानी जे कंप्यूटर टा आज ही आसीची. तो 5000 ईयर 5000 वर्ष पूर्व ता कॉन्सेप्ट टा हमर तयारी हेतला, तापर हमर कंप्यूटर आसीला. abacus is called as the what, I mean the Charles Babbage कहूचे. तो abacus system रो हमर आस्तला. abacus ता जेमति रहउची, just like when the kids are starting the classes, so they having a slate, in that slate they having some kind of balls, गोटे गोटे मारी सब रहउतला. से मारी रो से माने काउंटिंग करथले, गोटे तारा रे गोटे एमती मारी गोटे रहउतला, आ गोटे 2 एमती कहि के 10 मारी रहउतला. तो abacus introduced in where like in our schooling curriculum for the better mathematics. Okay. And the first full size digital computer in the history was developed in 1944. In the 1944 the first digital computers are come. So what are the computers now we are using? It is in the digital form, called as Mark I. से जो कंप्यूटर थिला ताको कहला Mark I. This computer was used only for calculation and weight is 5 ton. ओके 5 टन रहउतला, जेमति कि माने 500 केजी, माने ताको उठेबा ये पई ट्रॉलर दरकार पड़तला. एबे ताको रखिबा पई भी गोटे बड़ घरर आवश्यकता पड़तला. Despite its size and limited ability, it has the first of many that would start up generation of computer development and growth. तो फास्टली इटा जिते बड़ हेले भी तो कंप्यूटर रो इटा को फास्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कहा जाउतला. It has the size about 5 ton, and if you want to place that computer, it will take a big house, माने गोटे बड़ घर दरकार पड़तला. गोटे कंप्यूटर रखिया पे गोटे बड़ घरर
आवश्यकता रोचे बट लैटर कौन हो जो फास्ट जनरेशन कंप्यूटर आसला द फास्ट जनरेशन कंप्यूटर bore little resemblance to computer of today either in appearance or performance माने एटा एबे आइदर appearance और performance रे एबे एटा बेटर हमको शो कर माने टिके कमी गला जेता फास्ट जनरेशन फास्ट जनरेशन कंप्यूटर जोड़ा आमर थिला सेटा होची 1940 रु 1956 ए समय मोर फास्ट जनरेशन कंप्यूटर आस्तिला was extremely large in size. The inner workings of computer at that time was unsophisticated. एते भलो नथिला. These are early machine required magnetic drum of memory of vacuum tubes. माने ये जो कंप्यूटर आमे यूज कर जाउथला सेठी सब आमर ग्लास ट्यूब सब यूज कर जाउथला बुझौची आज्ञा सर तो एठी सब आमर ट्यूब यूज होतला बड़ बड़ ट्यूब सब रहउथला से ट्यूब रे आमर मेमोरी मैनेजमेंट हुए अच्छा ताको क्यारी जेतबेले करा जाउथला से काच ट्यूब टा भांगी जाउथला एंड इफ आई वर्क फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइमिंग मु जदी अधिका समय सेठी काम करबा को चाहूची से नळी गुडाक गरम है कि फाटी जाउथला तो मते एवरी टाइम ताको कोन करिया पड़थला ना रिप्लेसमेंट करबा को हमको पड़थला so these are early machine required magnetic drum for memory and vacuum tube that work as switches and amplifier it is switch भी रहउथला amplifier भी रहउथला it was the vacuum tube that were mainly responsible for large size the machine and massive amounts of heat that they release आ भितर जो कंप्यूटर टा हमारे बेसी यूज करूथले आ भितर बेसी हीट टा जनरेट होतला बेसी गरम टा आस्तला गरम आसले से काच नळी फाटी जाउतला this computer produced so much heat that they regularly overheated despite the large cooling unit ताकू ठंडा करिया पई हमको एसी टा बार बार चलेवा को पड़ुतला कारण काच गुडा का फाटी गले मोर डेटा गुडा का लॉस हे होतला Fast generation computer also use very basic programming language that is referred to the machine language. तो सेते बेले भी हमको हमें सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करथले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोन हमें जेमति के जनक सहित कम्युनिकेशन करिया पई वेयर बेसिकली वी आर यूजिंग in our part in our state we are using Odia and for communicating to others like we are English Hindi so these are the languages we are using to communicate with other people. The similar way for communicating with the computer, we are using programming language. The computer सहित हमको communication करिया पे हमें programming language use करूथले. Fast generation computer also use very basic programming language that is referred to as a machine language. ताको हमें machine language बोले हमें कहि परिबा. The period of second generation was from in 1959 to 1965. In this generation, transistors were used that were very cheaper and consumed less power, and more compact in size, more reliable, faster than the fast generation computer machine. Fast generation computer machine no take fast thela. In this generation, magnetic core were used as a primary memory, magnetic tape, magnetic disks as a secondary storage device. Primary और secondary. Primary means माने कंप्यूटर को चलेवा पई किछि इंस्ट्रक्शन किछि मेमोरी दरकार सेटा होची प्राइमरी मेमोरी डिवाइस तापर जो भी इंफॉर्मेशन हमें स्टोर करछे सेटा हमर हार्ड डिस्क रे स्टोर हुए जेमते कि हमर आगुरु रॉम कांसेप्ट नथिला मोबाइल रे जो कीपैड मोबाइल फोन होची तार गोटे स्मॉल अमाउंट ऑफ मेमोरी हमर डिफाइन करवा होतला सेटा होची प्राइमरी मेमोरी सेठी हमें कोन करथला हमर मोबाइल टा चलीवा पई किछि जो सॉफ्टवेयर टा रहिवा पई किछि मेमोरी दरकार से मेमोरी रे से स्टोर होतला तापर हमें जो कांटेक्ट नंबर म्यूजिक किबा अलगा फाइल गुडा का बहुत कम स्टोर होतला बट एबे हमर इंटरनल मेमोरी हमें यूज करछे मोबाइल रे
तमें जब लिखो 64 GB रो मोबाइल किणी बट देखिए तादरे ऑलरेडी किसी ऑक्युपाइड हो जाइथिबो माने 5 GB 6 GB ऑक्युपाइड हो जाइथिबो से जो जीबी ऑक्युपाइड होइथिबो सेटा ऑपरेटिंग सिस्टम पय ऑक्युपाइड होइताय माने तुमरो मोबाइलटा चलवा जी मेमोरी दरकार हुए तो सेठी हमर रहिबो in this generation assembly language and high level programming language like Fortran COBOL were used the computer used the batch processing and multi programming operating system ओके तो ब्याच बाय ब्याच मोर एटी वर्क काम करा होतला एठी जो लैंग्वेज वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें यूज करके कंप्यूटर सहित इंस्ट्रक्शन पास करथले so that is called as the Fortran and COBOL language were using सर प्राइमरी मेमोरी जो कहले मैग्नेटिक टेप मैग्नेटिक डिस्क सर से आउट बुझे देबे magnetic core were used in the primary memory and magnetic tape were used so I am showing the figure it will understand you नॉर्मली कौन हुए आम जो कौन इलेक्ट्रोनिक डिवाइसटा खोलू सी गोटे बड़ बोर्डटा आसता है से बोर्ड रे गोटे कौन थाए गोटे बड़ चिप भाया लगी थाए से चिपटा गोटे चुंबक भाया कला भाया गोटे लगी थाए मैग्नेटिक कोर ताको कहा जाए बुझीगला ताको ये जो छोट छोट पिन बाहर थाए ये पिन सहित रही थाए बुझिपाइल आज्ञा सर ये भाया देखुथुब तुम आम रेडियो खोल पाइपर आमर जो टीवी खोल भी पाइपर सिस्टम खोल आम कंप्यूटर आज्ञा खोल सर पाइपर बुझी आज्ञा सर So in this generation, we are using assembly language. ये language use करके हमें कंप्यूटर को instruction provide करते हैं जैसे कि हमारा ये गला Fortran language, COBOL language. So these the computer use the batch processing and multi-programming operating system. Batch processing होची ଯେତେବେଳେ गोटे गोटे इंस्ट्रक्शन से प्रोसेस कर से एका बेले के सब इंस्ट्रक्शन रखुला एट ए टाइम इट विल प्रोसेस द इंस्ट्रक्शन ताको कहा जाए बैच प्रोसेसिंग एंड मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम माने एट ए टाइम यू कैन डू द मल्टीपल वर्क जमते कि मु एटी वीडियो चैट करूची मींस आई एम कनेक्टिंग विथ द वीडियो एंड आई एम कनेक्टिंग विथ व्हाट कंप्यूटर कंप्यूटर में तुमको किसी स्क्रीन टा शेयर करके किसी इनफॉरमेशन शो करूची एपटे तुम सहित कथा ही पारुची सो एट ए टाइम लॉट ऑफ थिंग आई हैव डिड मींस एटी मो वीडियो कॉन्फ्रेंस थ्रू तुम सहित कॉल करी होउची आ सहित मोर माने गोटे तुमको टाइम किसी रे जिनस प्रेजेंटेशन दबार अछि माने मु दो तुमको तीनटा दे प्रोग्रामिंग पारुची करी सो होतला बोथ आई कैन डू विद इन द सेम टाइम एटा होची मोर मल्टी प्रोग्रामिंग एट ए टाइम मल्टीपल वर्क करी होउची एबे किंतु आगरु कोन होतला जो ऑपरेटिंग सिस्टम थिला हमें मल्टीपल वर्क करि पार नथि बुझ पाइलो आज्ञा सर the main feature of second generation computer are it is use the transistor it is transistor use hotla reliable in comparison to fast generation computer smaller size as compared to the fast generation computer generated less heat as compared to the fast generation computer कम गरम होतला कंज्यूम लेस इलेक्ट्रिसिटी भी कम कंज्यूम होतला देन द फास्ट जनरेशन कंप्यूटर फास्टर देन द फास्ट जनरेशन कंप्यूटर and but still it is very costly it is not used for what for the every human माने सब लोक से समय यूज करि पार नथले एटा बहुत कॉस्टली थिला आउ मेन थिंग है एसी दरकार मशीन को एसी दरकार पड़ता एबे आउ सेमती रहउनी
যেটা देखिए आम मोबाइल टा बेसी समय कथा हो मोबाइल फोन टा गरम हो जाए तो कंप्यूटर भी सेमती ଆଜ୍ଞା गरम नहीं ସାର୍ होता तो दैट इज गरम है से कौन करतला ना ता भीतर जो काच नळी गुडा थला ताको फटै देउतला ପାଇପ୍ ଥିଲା ସେଗୁରା ସବୁ ଫାଟି ଯାଉଥିଲା। कोन कहले अंकल सर ଆପଣ କହିଲେ ଯୋଉ କାଚର ଯୋଉ ନଳି ଥିଲା ସେ ସବୁ ଗରମ ହେଇକି ଫାଟି ଯାଉଥିଲା हम्म ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜେନେରେସନ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर तापर सेकंड जनरेशन कंप्यूटर कौन होता ना ताको तार रिप्लेस है हम ट्रांजिस्टर यूज है माने आओ ए जो वैक्यूम ट्यूब सेटा रहिलानी ता जगह हम ट्रांजिस्टर सब यूज कर जो पिक्चर टा तुमको देखैले तो से ट्रांजिस्टर गुडा सब यूज है ଆଜ୍ଞା बुझि पारलो ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା हम्म सर ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ ଟ୍ୟୁବ ଟା କଣ ମାନେ ସେଇଟା এইটা যেমতি কি আমরা পরীক্ষা নলী जोटा कि আমরা দেখুথবা ল্যাবরেটরি মানে করে এবে जो ଆଜ୍ଞା ସାର୍ कोरोना भाइरस रे जो देखौची सब साइंटिस्ट माने गोटे नळी ଆଜ୍ଞା नै ସାର୍ की करନ୍ତି ତ ସେଇ ଭଳିଆ ତ ସେଇ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଟ୍ୟୁବ ଭଳିଆ ଅଛି ହଁ ଏଇ ସବୁ ସ୍କୁଲ ରେ ପଢିଥିବ ଯୋଉ ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ ଟୁ ରଦର ଫୋର୍ସ ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ ଟୁ ସେଇ ଟାଇପ ର ଦେଖଉଛି ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଏଇ ଟାଇପ ର ଏମିତି ଆଉ ଏଟା ତ ଟିକେ ଇଏ ଦେଖଉଛି କିନ୍ତୁ ପୁରା କାଚ ନଳୀ ଆହୁରି ପତଳା ଥିଲା ଦିବସ ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ ଟୁ ଦେଖି ଦଉଛି ये रहुଛି ସବୁ ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ ଟୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଗାଡ଼ି ବଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ରହୁଥିଲା ତ ଏଇ ଟ୍ୟୁବ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଏମିତି ଖଞ୍ଜା ହେଉଥିଲା ଏଇ କାଚ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଖଞ୍ଜା ଆଜ୍ଞା ହେଉଥିଲା ସାର୍ ଏଇଭଳିଆ ର୍ୟାକ୍ ଯୋଉ ଦେଖୁଛ ଏଇଠି ଏଇ ର୍ୟାକ୍ରେ ସବୁ କାଚ ଗୁଡ଼ାକ ଖଞ୍ଜା ହେଉଥିଲା ତା ଭିତରେ ଯଦି ବେଶୀ ସମୟ କାମ ହେଉଥିଲା ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ କାଚ ଗୁଡ଼ାକ କ୍ରାକ୍ ହେଇଯାଉଥିଲା ବୁଝିଯାଉଛି ଏଇଟା ହେଇକି ଫାଷ୍ଟ କ୍ରାକ୍ ହେଇଯାଉଥିଲା ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ କାଚ ନଳୀ ସବୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା ବୁଝିଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା ସାର୍ so still it is very cost AC is required it supported the machine and assembly language some computer of this generation is IBM 1620 IBM 7094 CDC 1604 CDC 3600 UNIVAC 1108 so these are the what some computers are present in that particular second generation ଯେମିତି କି ଏବେ ଆମେ କହିପାରିବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନେମ୍ HP ଅଛି ଡେଲ୍ ଅଛି ତ ସେ ସମୟରେ ଆମର ଏଇ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସବୁ ୟୁଜ୍ କରାଯାଉଥିଲା IBM 1620 IBM 7094 CDC 1604 এই ସବୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସବୁ ଆମର ୟୁଜ୍ କରାଯାଉଥିଲା ବୁଝିଗଲା ଆଜ୍ଞା ସାର୍ then third generation computer the period of third generation was from 1965 to 1971 the computer of third generation use integrated circuit तो एठी vacuum tube आउ ट्रांजिस्टर ये सब रिप्लेस हो गला ता जगह रे हमर इंटीग्रेटेड सर्किट यूज कराला इन द प्लेस ऑफ ट्रांजिस्टर ए सिंगल आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट has many transistor गोटे सिंगल आईसी रो कैपेसिटी जहा तादर मेनी ट्रांजिस्टर आउ रजिस्टर रो कैपेसिटी सेति the IC was invented by Jack Kilby the development made computers smaller in size जेते माने हजार हजार संख्या ट्रांजिस्टर जदि गोटे चिप रे रही जाउची
साइजटा कौन हो ऑटोमेटिक कमी जीवो समय जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आम यूज करते सेठी होतला फोर्टन देन कोबल देन पास्कल बेसिक algol so these are the different what programming language we are using जेमति कि आमे C C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते तो एठी भी सेमती एबे यूज करूचे जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो एठी आमे ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करियो बुझियला again sir. The main feature of third generation are one is integrated circuit is used. It is more reliable in comparison to the previous two generation. It is very small in size and it is generate the less heat, faster, lesser maintenance, costly. Then it is AC is required, consume lesser electricity than the previous what version, supported the high level programming language. Okay, then the in the third generation computer, which computers are we are using? One is IBM 360, Honeywell 6000 series, PDP, IBM 370 divided by 168, TDC 316. So these are all called as the third generation computer. बुझिएला Again sir. The next period is called as the fourth generation computer. It comes from 1970 to 1980. The computer of fourth generation use very large scale circuit. The in place of integrated circuit, it is include the VLSI, means very large scale integration circuit. About 5,000 transistors are replaced within the VLSI. The fourth generation computer become more powerful and compact, reliable, affordable. As a result, it gave a rise to the personal computer revolution. So personal computer जोटा कि मार्केट को आसेला तो ए जनरेशन फोर्थ जनरेशन आसेला. So in that part your cost for the computer is very cheap, and here we are using the different programming language like C, C++, database. Okay, so these are the programming language we are using in this part. The main feature is what? The main feature of this fourth generation is it contains the VLSI technology to use, very cheap, portable and reliable, use of PCs, very small in size, then pipeline processing. So here no AC required. Concept of internet was introduced here. The great development in the field of networks. Then computer become easily available. So it what price wise it is decreased. Then the so what are the examples of this computer? One is DEC 10, Start 1000, PDP 11, then Cray 1, then Cray XMP is used in the supercomputer. Again sir. Okay. Then the new generation computer that we are using, that is called as that is we are using from 1980 till date. The fifth generation computer, the VLSI technology become ULSI, ultra large scale integration technology, resulting in the production of microprocessor chip having the millions electronic components. The generation is based upon the parallel processing of hardware and artificial intelligence software. Means here automatic your software is working. Artificial intelligence माने कौन हुए ना जमती कि हमार अलार्म बाजिबो बेले बेले कौन हुए ना हमें अलार्म सेट करिबा नहीं जदि हमें आगुरु सेट करके आस्ते अलार्म निजे निजे तरह सेट करी नहीं जीवो से टाइमिंग को. So all the high level programming language we are using like C, C. Okay, so it is used in the fifth generation computer. बुझियला? Again sir. So in the fifth generation, we are using robotics, neural network माने multiple लोगों से हमें connected कर पाइबा, game playing,
development and expert symbols, then natural language, then ULSI technology, development of artificial intelligence, development of natural language processing, then advancement of parallel processing, advancement of superconductor technology, more user-friendly interface with the multimedia feature that is present in the fifth generation. So some of the computer type that we are using, one is desktop, it is used in the laptop, it is used in the ultrabook or Chromebook. So these are the sector where we are using this fifth generation computer. Okay, okay. So Again, sir. the next class, Saurav sir will take from this analog computer. Okay. Okay, sir.